Respected physical education teacher and my dear students, myself Praveen Mishra. Today's session is CBSE sample paper 2. Sample paper 1 I already published in last week. Now the typology of question is already it is similar for the previous question papers. The section is total 5 sections are there. Total question is 37. Section A 1 mark, section B 2 marks, section C 3 marks, section 4 marks. It is case based, value based, picture based questions are there in section D. Section E there is a 5 marks question. Now section A will start. Now ABC school is recognized as one of the esteemed education institution in its area due to the extensive sports facilities it offers to its stakeholders. In light of this, the CBSE Sports Cell has entrusted them with the task organize the CBSE football cluster. A total 25 teams have submitted and their entries to participate the tournaments. कौन से tournaments करेंगे अगर 35 teams है? It is knockouts. How many the questions are? The total number of bias in the features will be. तो यहाँ पर highest power इसका 64 होगा. 64 से हमें 35 minus करना है. Now the answer is 29. Now assertion reason based question. Assertion women's question number 2. Assertion reasons. Women's sports serve as a vital instrument for the social empowerment, fostering the skills such as communications, teamwork, leadership, respect, social interactions, and sportsmen. They're making a significant contributions to the development of the society community. Now the reasons are participation in women sports not only offer the health benefits but also encourage overall developments. Sports do not discriminate based on their color, caste, creeds, sex and their different type of races. Now the statements are the similars. Now the answer is A. Both assertion and reason are true and reason are correct explanation of assertion. Now match the columns. मैच द कॉलम्स जैसा CBSE टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन से दिया गया वहाँ पर सम मैच द कॉलम्स होगा. उत्तरासन, धनुरासन, उत्थान, अर्धोआसन, शवासन. नाउ द सिटिंग आसन, लेइंग आसन, स्टैंडिंग आसन और रिलैक्सेशन आसन. ना अगर आप देखेंगे मैच तो यहाँ पर बी होगा. पहला जो होगा उत्तरासन इट इज सिटिंग आसन है. धनुरासन इज ऑल्सो लाइंग आसन है. ऊर्ध्व हर्षोआसन इट इज स्टैंडिंग आसन. और द आंसर इज शवासन रिलैक्सेशन आसन में आता है, यानी इसका आंसर बी होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टराइज्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में नहीं आता है? मैक्रो मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन्स. ऑल द थ्री ए बी सी ऑलरेडी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, यानी प्रोटीन एक मैक्रो प्रोडक्ट्स है. आइडेंटिफाई द आसन. आसन आपको देख के आंसर बताना है. अगर आसन देखेंगे भुजंगासन, हलासन, सरल मत्स्यासन या धनुरासन. नाउ द आंसर इज सी, सरल मत्स्यासन. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ शीतली प्राणायाम? शीतली प्राणायाम का मेन क्या ऑब्जेक्टिव है? टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, टू एलिवेट द बॉडी टेम्परेचर, टू सस्टेन द बॉडी वेट, टू मैनेज द अस्थमा. नाउ द आंसर इज ए, टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डज ICSD स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए International Committee of Sports for Deaf. Option B International Commission of Sports for Deaf. Option C International Committee of Sports for Disabilities. Option D International Committees for Sports for Disorders. Now ये जो ICSD one of the organization for deaf, यानी आंसर इज A, International Committee for Sports for Deaf. Question number 8. What remedial exercises should be performed by kyphosis? Jogging, jumping, running या swimming. Now the answer is D, swimming. Question number 9. For which organic compounds is carbohydrate derived? Option A carbon, hydrogen. Option B carbon, hydrogen and oxygen. Option C carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Option D carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus. Now the answer is B. It is a contain carbon, hydrogen and oxygen. Carbo means carbon, hydra means hydrogen, oxide means oxygen. Question number 10. What is the total count of test items incorporated of Sai Khelo India fitness test for children between the age of 5 to 8 years? इसमें कितने contents आते हैं? 2, 3, 4 या 5? It is answer is B, 3. BMI index, Flamingo balance ability test and plate tapping test are there. Question number 11. What type of physical fitness components are involved in
activities like weightlifting, jumping, sprinting and sports that focus on power, agility and strength where the protection of force is crucial. Now कौन सा इसमें होगा? स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी या एंड्योरेंस, जहाँ पर पावर यूज होगा दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ. क्वेश्चन नंबर 12, what psychological elements influence endurance? Aerobic, flexibility, age and gender and injuries. Notice aerobic capacities are there because action are present. Question number 13, the widely recognized assertions that zero net force, zero lead to zero acceleration is associated with which laws of motion? Newton's laws, Newton first law, Newton second law, Newton third law, yeah, all of the above. Now the answer is Newton first law. What kind of lever represented by the push-ups? First law of lever, second law of lever, या third law of lever, या both A and C. Now the answer is B, first class of lever. Question number 15. What characteristics individuals shaped by the junk promote them to create their own virtual and imaginative worlds, leading them to shy away from the public interaction and social relationship, and constantly they often exhibit less expressive towards those in their vanity, choosing intents to stay reserved and competitive and contemplative. Now the options are introvert, extrovert, ambiverts या both A and C. Now the answer is B क्योंकि यहाँ पर shy away बोला है. Question number 16, the drive force that encourages the people to participate in pursuit that provide the pleasure, joy, fulfillment or feeling of challenge is known as extensive motivation, active motivation, intensive motivation या cognitive. Now inner feeling that is called as intrinsic motivation. Question number 17, assertion reason based. Assertion are talent identification can also describe the process through which the children are encouraged to engage in the sports they are the most likely to excel in based on the specific criteria. The reason, the parameters, the talent are formulated by the forecast performance according to their potential, taken into account the children's excited the level of the fitness and the maturities. Same statements are there. Answer is A because assertion and reason are true and reason are correct explanation of assertion. Question number 18. Which flexibility methods to define the movements that features swinging and rhythmic motions? कौन सा मेथड्स इसमें होता है? दैट इज PNF, proprioceptive neuromuscular facilitation, slow stretching, C slow stretch and hold, and D is plastic method. Now the answer is D, plastic methods. Question number B, 2 marks questions are there. Please provide the consecutionous overview, the recommendation, the physical activities and exercises guideline, the aged 65 and other. यहाँ पर कौन सी exercises are available are there? Now, what type of exercise? The physical activities, walking, jogging, swimming, weight training, dancing activities, occupational work, household work, car wash, gardening, games and sports, recreation, transportation, walking, cycling, plants, exercises with or within families and their communities. इसमें आपको 0.5 मार्क्स यानी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर डालनी है. Now, question number 20, identify the functions fat soluble vitamin that is a part of balanced diet. 4 are there, A, D, E, K. यहाँ पर CBSE हैंडबुक्स में केवल A का ही chemical functions दिया है, that is called as retinol, and the functions may are visions in the dim lights, skins जहाँ पर स्किन की टेंडेंसीज को इम्प्रूव्ड होता है, ग्रोथ में डेवलपमेंट होता है, टिश्यूज एंड इम्यूनिटी सिस्टम्स को इम्पैक्ट डालता है. विटामिन डी, नीड फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, डीकम्पोजिशंस बेसिकली केमिकल एंड फॉस्फोरस या बोन्स की टेंडेंसी को कंट्रोल करता है. विटामिन डी, ई आर एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटेक्ट योर सेल वॉल्स. ऑप्शन के, नीड फॉर प्रॉपर ब्लड क्लोथिंग्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 21, एल्यूसिएट द प्रोसेस ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट. आपको यहाँ पर प्रोसेस बताना है. 2 मार्क्स आर देयर. यहाँ इसका स्टेटमेंट्स ऑलरेडी CBSE हैंडबुक्स में दिया है. बेसिकली जो टेस्ट है वो 5 मिनट्स का होता है. यहाँ पर 5 मिनट्स में कितने स्टेप अप और कितने स्टेप डाउन होता है उसको हमें कैलकुलेट करना है. ना CBSE हैंडबुक में शॉर्ट टर्म मेथड्स आर देयर, दैट इज 1 मिनट टू 1.5 यानी 60 to 90 मिनट्स के ड्यूरेशन के मेजर हमें काउंट करना है. Now question number 22, documents the immediate impact of physical activities on the cardiovascular systems. 1 + 1 2 दिया है. टोटल आर
दैट इज इंक्रीज देयर हार्ट रेट्स. अगर नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं तो हार्ट रेट चेंजेस होते हैं. इंक्रीज देयर ब्लड सर्कुलेशन में कैसे इंपैक्ट आता है. स्ट्रोक वॉल्यूम्स हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट रेट एंड ब्लड सर्कुलेशन या में कैसे इंपैक्ट आता है. द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो ड्यूरिंग द वन बीट्स इन द कॉन्ट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम्स. नॉर्मल परसेंटेज एक्टिविटीज़ में यहाँ पर बढ़ता है. एंड लास्ट, इंक्रीज देयर कार्डियक आउटपुट्स. कार्डियक आउटपुट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ हार्ट रेट इनटू अ स्ट्रोक वॉल्यूम. अगर एक नॉर्मल एक्टिविटीज़ हम करते हैं, यहाँ पर नॉर्मल में हमारी बॉडी में 5.0 लीटर पर मिनट्स में बॉडी ब्लड फ्लो होता है. बट अगर एक्टिविटीज़ करते हैं तो 20 से 40 तक ये फॉर लीटर पर मिनट्स ये ब्लड फ्लो हो सकता है. कोई भी दो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर शो करने हैं. क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हॉस्टाइल एग्रेशन इन द कंटेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स. कोई भी दो एग्रेशंस की हॉस्टाइल एग्रेशंस की यहाँ पर कंपोज बताना है. हॉस्टाइल मीन्स टू बीइंग अपोज, किसी भी चीज़ में अपोज करता है. वाइल्ड एंगर होता है अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर. एग्जाम्पल ऑफ बॉक्सर्स यहाँ पे दिया हुआ है. इम्पल्सिव एग्रेशन भी इसको बोला जाता है. अपोज करते हैं फॉर दैट. यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपको CBSE हैंड बुक्स में इंफॉर्मेशन ईजी वे में मिल जाएगी. तो बेसिकली फिजिकल एंड मेंटल हार्म करने की कोशिश करते हैं इन डिफरेंट बेसिस पे. टू कैरेक्टरिस्टिक्स, एनी टू कैरेक्टरिस्टिक यू हैव टू शो. क्वेश्चन नंबर 24, प्लीज आउटलाइन द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज प्रोवाइडिंग द एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल. 1+1 आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज किसने डिराइव किया था? जे पैरिन ने 1968 में किया था. पर्टिकुलर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस को बोला जाता है जहाँ पर आइसोकाइनेटिक्स होता है. यहाँ पर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस जो टेंडेंसीज होती है, रोइंग हो गया, स्विमिंग्स हो गया, बेसिकली यानी कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन दोनों साथ होता है. प्लस हमें रेंज में डिफरेंट रेंजेस में हमें इसको वर्क करना होता है. डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है. यहाँ पर रेंज ऑफ मोशन अराउंड द जॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पर टेंडेंसीज को डेवलप किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 25, इट इज सेक्शन C. Create a features of 25 teams with 8 team are to be designated as a seeded. यानी 8 है तो टीम्स क्या होगी? प्री क्वार्टर्स में खेलेगी. ना देयर दिस मेथड्स आर देयर कि जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टीम्स अगर 8 दिया है, अगर 25 टीम्स में से हमें डायरेक्टली इसको माइनस कर देना, उसके बाद हमें उसको बायस निकालना है. एवरीवन नोस कि हमें इसमें टीम्स में हमें कैसे इसको मेजर किया जाता है. Question number 26, a comprehensive overview of the different categories of menstruation disorders. Total आपका menstruation disorders 7 और 8 are there, but आपको यहाँ पर 0.5 करके यहाँ पर 6 NE6 we have to derive. Now these are the काफ़ी references books में different दिया है, but I was taken in the CBSE handbooks. It is a pre-menstruation syndromes. That syndromes are ये disorders basically females characteristics या girls में होता है. That is unpleasant and uncomfortable symptoms of their during their pregnancies, menstruation cycles. That time क्या होगा? Include their depression, anxiety, irritation या headache होता है और sometime vertigo या infections भी होते हैं. एमीरोहा बेसिकली कोई भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल मिस हो जाती है. डिफरेंट टाइप ऑफ मंथली जो साइकिल्स होती हैं वहाँ पर 2 मेथड्स होते हैं, प्राइमरी एमीरोहा एंड सेकेंडरी एमीरोहा. ना प्राइमरी एमीरोहा टाइम में मेंस्ट्रुएशन साइकिल डज नॉट बिगिन, स्टार्ट नहीं होती. सेकेंडरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल मिस हो जाती है आफ्टर 3 मंथ. Dysmenorrhea, the menstruation cycle happens in the severe pain during the menstruation cycle and the कभी कभी क्रैम्प्स भी होते हैं. Menorrhagia, that is a menorrhagia characterized by the heavy and long टर्म कंटिन्यूशन मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग से काफ़ी लंबे टाइम चलती है. पॉलीमेनोरिया वो होता है जहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आती है, दैट इज 21 डेज. ओलिगोमेनोरिया, दैट इज अ फ्रीक्वेंटली मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होती हैं. द पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल्स जो होता है वो 35 डेज का होता है. मेट्रोरेजिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ मिस्ड डिलेड होती है, समटाइम इरिटेट होता है जहाँ पर एरिटिक होता है ब्लीडिंग्स में. पोस्ट मेनोफोसिया ब्लीडिंग्स होती है जहाँ पर ब्लीडिंग का कंटेंट जो होता है वो 1 ईयर या काफ़ी लंबे टाइम्स के बाद होता है. एंड शायद सम टेंडेंसीज में वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स भी स्टॉप भी हो जाती है. एनी 6 आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना बिकॉज इट इज हाफ एंड हाफ मार्क्स आर देयर. Please provide an overview of the classification pertaining the eligible impairments of Paralympics. Now classification basically Paralympics के लिए होता है, divisioning special Olympics के लिए होता है. यहाँ पर भी 8 categories are there and 6 you have to describe. Especially impairment of muscle powers, impair of passive range of movements, loss of limbs or limbs deficiencies, leg length, loss of limb of deficiency, leg length differences,
shorter structures, hypertonia, ataxia or arthronis, that is the part of जहाँ पर some different type of disorders या postural deformities होते हैं. Sometimes मेरी जो language है वो थोड़ा सा आपको difficult लग रही होगी, but the contents are arthronis are there. Question number 20, elucidate the three prevalent food meats along with the corresponding facts. यहाँ पर 3 आपको बताने हैं. जिस टाइम फूड मीट्स बोला जाता है, ऑयल एंड माइग्रेन्स हैव द फीवर्स कैलोरीज देन घी एंड बटर्स. ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पर घी एंड बटर माइग्रेन हैव सम अमाउंट्स ऑफ द कैलोरीज. माइग्रेन विच मेड द वेजिटेबल ऑयल्स was seen as a healthier alternative than the butters, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल या सैचुरेटेड फैट को बढ़ाता है. एप्पल एंड ब्रिंजल्स आर द रिच इन द आयरन बिकॉज दे आर turn brown when the cuts. Milk should be avoided after eating. Drinking water in between the meals affect for digestion. कोई भी 3 statements you have to आपको describe करने हैं. Examine the different categories of kinetic frictions, providing an appropriate example for the realm of sports. यहाँ पर 3 different categories are there. Sliding frictions क्या है? They are the pushing of an object across their different type of surfaces are there. Example skating, ice skating जहाँ पर very less frictions होता है. Rolling frictions across their wheels and on the surfaces when the 2 bodies are in contact and one body are rolls over each other. Examples are when the hockey or cricket balls hitting being the moved out from the grounds. Now next is fluid friction. It is oppose the motion. Objects traveling through the fluids जैसे gas, air और water through. Example is when you ride a bike, fluid frictions across between you and the air. Cyclist होते हैं जहाँ पर velodrome में cyclist होती है. Paragliding versus hand glidings are with the glides on their effects. Question number 30. Discuss the benefits of self-talk utilization by the athletes in the realm of the sports. Now the answers are building and developing their self-efficiencies, skill acquisitions, create and changing modes, controlling their effects, focusing of their attention and their concentration. यहाँ पर any 3 you have to develop, 5 are there. This contents already in the CBSE books. Do not take any references book because the references books are written some different contents. Now CBSE क्वेश्चन नंबर 31, पिक्चर बेस्ड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. कम्युनिटी स्पोर्ट्स यहाँ पर दिया हुआ है. ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व कब होता है? 29th of August. विच रेस इज कनेक्टेड टू द फोर्स्ड ब्रदरहुड्स? रन फॉर फन. ऑप्शन बी रन फॉर स्पेसिफिक कॉज. ऑप्शन सी रन फॉर यूनिटी. ऑप्शन डी रन फॉर हेल्थ रन. ना रन फॉर यूनिटी के लिए यहाँ पर ब्रदरहुड के लिए किया जाता है. Which community programs falls under the categories of race, including the lemon spoons race, sack race, 3-leg race, parents and children race, teachers and children race, banana race, and road running race? Now the options are run for fun, run for a specific cause, run for unity, and health run. Now the option is A, run for fun. Which communities programs are classified under the specific cause of cancer, AIDS, and gathering in equality? Now the options are run for fun, run for specific cause, run for unity, and health run. Now the answer is specific cause. Specific cause के लिए कैंसर, एड्स या जेंडर इनइक्वालिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है. ना क्वेश्चन नंबर 32, अगर पिक्चर देखेंगे तो स्पेशल ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स का दिया है. ना हमें यहाँ पर आंसर्स इस स्पेशल ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के हैं. Now the first question is the International Paralympic Committee was established in the year 19. Answer is 1989. ऑप्शन नहीं दिया है because it is a competency based question. आपको याद रखना पड़ेगा. Now the question number 2, the year instead of logo of the Special Olympics are derived from the sculptures joy and happiness of all children of the world, which are created by Jubran Tarsil and later is adopted. किस ईयर में किया गया है? द साउथ ईयर इज 1977, 1978, 1979 या 1980. द आंसर इज 1979. व्हाट इज द मोटो ऑफ पैरालंपिक्स? स्पिरिट ऑफ मोशन, CTS, LTS, 40s, joy and happiness and togetherness. Now the answer is A, spirit of motion. In which year the first Olympics, Special Olympics went held? 1967,
1968, 1969 या 1970? Now the answer is 1968. Question number 33, it is chapter number 7, fractures का questions है. Now question number 1, what type of fractures occur when the broken end of the bone are jammed together by the force of injuries? Now the answer is B, impact fractures. Question number 2, the fractures is in which the bone is broken, splintered and crushed into the number of pieces. That is, options are transfer fractures, impact fractures, oblique fractures या comminuted fracture. Now the answer is D, comminuted fractures. Now question number 3, what does it means where there are the straight break across the bone? The answer is A, transfer fracture. Options are similar given. Now question number 4, the fracture in which fracture of one in which the bone breaks diagonally, जो bone होता है वो diagonally चला जाता है, transfer fracture, impact fracture, oblique fracture या comminuted fracture. Now the answer is C, oblique fracture. Now next section E, draw a correct diagram of Dhanurasana, discuss the meaning and techniques of benefits and contradiction of asanas. All the 5s are there. Diagram का 1 marks, meaning का 1 marks, techniques का 1 marks, benefits का 1 marks and contradiction का 1 marks. Total are 5 marks are there. This information is already in CBSE handbooks. The meanings are संस्कृत वर्ड से लिया, जो भी आसन उसका मीनिंग संस्कृत वर्ड से ही लिया गया. धनुर means bow and asan means positions. Different type of positions are there. Now documents the methods of 5 sets that includes the Rickley-Jones senior citizen test. यहाँ पर total 6 tests are there. Any 5 you have to describe. The tests are chair sit and reach, chair stand test for lower body strength, arm curl test for upper body strength, chair sit and reach test for lower body flexibility, back stretch test for upper body flexibilities, 8 foot up and go test for agility and 6-minute walk test for aerobic endurance. Same, already 6 are there, any 5 you have to describe. All the combination of methods available in the CBSE handbooks. Informations आप जाके देखेंगे तो CBSE handbooks में आपको आसानी से मिल जाएगा. Please provide the details explanation of different type of cognitive abilities. यहाँ पर different type of cognitive abilities के बारे में informations देना है. There are the 7 different type of cognitive abilities are there. Any 5 you have to describe. First is orientation abilities are there. Orientation abilities, the change positions and the movements of their different type of body according to the time and the space available of the playfields. Differentiation abilities, there are the different type of attaining the fine training movements according to the different type of movements phases. Coupling movements are there, it is ability to coordinate the body parts of their movements with one another and define the goal oriented body movements. Rhythm movements are precise their rhythm of their movements and do the exercise in their rhythmic ways. Reaction abilities to react of your body in the different type of stimulus or different type of signals according to their visual, auditory or different type of tacticals are there. Sixth, adaptation of abilities of their adaptation abilities, हमारी body कितनी देर में adjust करती है and that is a part of adaptation abilities according to the based on their changes and anticipated changes. Now next is balance abilities to maintain their equilibriums and or balance of our body. यहाँ पर 2 type of movements balance होते हैं, जहाँ पर maintain during the stationary position and rapidly change of their body positions. जैसे कि हम different type of static या हमारी body change करती है static to different type of movement basis पे. तो यहाँ पर regain their balance, changing their positions and their primary functions capacities को vestibules, senses organs को control किया जाता है. Any 5 you have to describe. Last question, examining the different factor influence their projectile motions के different type of effect factor, effective लिखना है. First is gravity it is exerted of their earth on the objects toward the center of gravity, center of your body. Now air resistance, हमारी बॉडी में एयर रेजिस्टेंस द वाइटल रोल. यहाँ पर सरफेस एरिया, स्पीड, सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर डिटरमाइन होते हैं. ना स्पीड ऑफ रिलीज, एंगल ऑफ रिलीज ऑफ देयर प्रोजेक्शन. ऐसा बोला जाता है कि
डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स में नियरली अबाउट हमें प्रोजेक्टेड 45 डिग्रीज में करने हैं। बास्केटबॉल में डिफरेंट होता है, 48.2 से लेकर 52.2 तक होता है। जॉन फंटेनल की थ्योरीज हैं। हाइट ऑफ रिलीज, एक पर्टिकुलर हाइट रिलीज अगर हम हाई लो लेवल में करते हैं तो रिगेन नहीं होता है, डिस्टेंस जाएगा नहीं, हॉरिजेंटली और वर्टिकली यहाँ पर डिटरमाइंस होते हैं। एग्जाम्पल हाइट ऑफ रिलीज बेसिकली थ्रोइंग इवेंट जैसे जैवलिन, हैमर, शॉर्टपुट पे डिटरमाइन होते हैं। एंड लास्ट इज स्पिन। हमारी बॉडी में हम जब कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, एयर प्रेशर्स आर देयर और वही एयर प्रेशर जनरेट करता है क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिटरमाइन होते हैं डिफरेंट लेवल्स पे। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिन्स इन द बास्केटबॉल शूटिंग्स जो डिफरेंट लेवल्स में किया जाता है। Now my dear students, now I will show you the typology of question papers as well as the important question papers very soon, important topic very soon. Kindly share these topics to your colleagues and dear teachers, kindly share these topics. Do not use any reference book. Reference books CBSE जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है वो CBSE हैंडबुक से करता है। ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो CBSE हैंडबुक से होंगे, इसलिए समटाइम्स जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मैच नहीं खाते हैं CBSE रेफरेंस बुक से। आई एम नॉट टेलिंग कि रेफरेंस बुक यूज़ नहीं करना है, बट जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स बनेंगे वो CBSE हैंडबुक से बनेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।